Hello everyone. Why only 8 of you are here? Not even 8 are here. There are only 7 people out of you. Why only 7 students are attending the class? Okay, we don't know. Anyways, they are going to lose their attendance. What can we do about it? Okay, today we would be talking about. Just give me a minute. Okay, today we would be talking about markets and competition, and we would also be starting with the understanding about what do you mean by demand curve and how it is related to it. So, yeah, let me share this. Okay, can anyone tell me what do you mean by demand? Demand की definition कोई मुझे बताएगा? Okay, Parth can't attend the lecture. What do you mean by demand? Ma'am, ma'am, Yeah, yeah, Khushbu. ma'am, demand is something where there is a purchase and sales of goods and service, and in which there is willingness to pay a price for a specific good or service. And Okay, in law of demand, we can say that when the price increase, the demand diminishes, and price decrease and demand increase. great, So great, this follows the demand function. great, beta. Uh, What do you mean by supply? Can anyone tell me supply क्या होता है? Okay, today we would be talking about the concept of supply and demand. Okay, कि मार्केट इकोनॉमी में अगर हम लोग डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं तो कैसे काम करता है इकोनॉमी, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे. So demand is basically any type of any activity which is undertaken, and here we would be having something called as the willingness to pay, like Khushbu has already said कि लोग willing होने चाहिए पे करने के लिए. The combination of demand is included into, or demand includes 3 different criteria which have to be met. Okay, let's revise this. ये हमने पिछले सेमेस्टर पढ़ा था. Demand has to satisfy 3 conditions. First and foremost, there needs to be a need for the good. Then there needs to be an ability to pay, and there needs to be a willingness to pay. Okay, the combination of these 3 things, when it is done together, when we have this together, then we get the demand for a particular commodity. Commodity की जो demand है, ओके, कमोडिटी जब हम लोग देखते हैं तब अगर हम कुछ डिमांड कर रहे हैं तो ये तीनों फैक्टर्स जब साथ में होंगे तब जाके हमारा डिमांड क्रिएट होता है, वरना डिमांड आप नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते हो. द डिमांड हैज टू बी देयर इफ even if one of the condition is missing. Okay, even if one of the condition is missing, then there is no demand for a particular product. That's what we would be saying. Say for example, a person has willing is having demand. ओके, उसको नीड है पर उसके पास अगर उतनी कैपेसिटी नहीं है पे करने के लिए, then he will not be that is he does not have the ability to pay, then there is no demand for a particular product. On the other hand, he has the ability to pay but he is not willing to pay, then also there is no demand for a particular product. So in case if a demand of a product is there, okay, अगर demand है
और सप्लाई है, तब आप आगे बढ़ सकते हो प्रोडक्शन के लिए. Okay, then you will be able to say that okay, production can be undertaken for such a commodity because उसकी डिमांड भी है और उसका सप्लाई भी है. पर अगर डिमांड है ही नहीं तो उसको आप प्रोड्यूस करके नहीं रखोगे. तो यहाँ पे आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो वी वुड बी डिस्कसिंग द मैक्रो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो can anyone state the law of demand for me? Just give me a minute. So when we talk about the, can anyone tell the law of demand? पिछले सेमेस्टर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड. Additional benefit, sorry, not additional benefit, sorry. When other things remain constant, what happens when the price increases? Demand decreases. Okay, when the price increases, when other things remaining, law of demand states that if other things remain constant, when the price of a commodity increases, the demand of a particular commodity decreases. That is the law of demand. Law of demand जो है वो हर जगह पे अप्लाई होता है. जब हम लोग डिमांड फॉर मनी देखेंगे तो उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड आपका अप्लाई होगा. Now, when you're talking about markets and competitions, and how the things are working out, the terms demand and supply, okay, in general sense and in other senses as well. The term demand, just give me, the term demand and supply basically show as to how people interact with different with the market. Okay, demand demand and supply together show as to how people interact in the market. So यहाँ पे एक चीज आपने ये देखनी है कि बायर्स और सप्लाई एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरैक्ट करते हैं मार्केट के अंदर, वो आप डिमांड एंड सप्लाई के इंटरैक्शन की तरफ को स्टडी करके अज्यूम कर सकते हो. व्हेन आई से मार्केट, मार्केट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. अभी तक हमने मार्केट कैसे देखा था, आज तक हमने मार्केट की डेफिनेशन क्या लिखी थी कि इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन. ओके, मार्केट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन, ऐसे हम लोग कह रहे थे. अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. So market, it is a group of buyers and sellers. What do these buyers and sellers do in this market? These buyers and sellers basically undertake transactions which are related to a particular good or service. Okay,
it is a group of buyers and sellers which interact for a particular good और सर्विस. नाउ ये गुड और सर्विस के लिए वो लोग इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में. These two together, okay, buyers would be comprising of the demand side. Buyers create the demand side and sellers create the supply side. ओके अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो बायर्स जो है वो डिमांड साइड पे चले जाते हैं, सेलर्स जो है वो सप्लाई साइड पे चले जाते हैं. ना मार्केट्स कैन बी ऑफ मेनी फॉर्म्स. मार्केट्स बहुत तरह के हो सकते हैं. Many markets are very organized, okay, highly organized, such as for example the markets wherein we are undertaking financial transactions. वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं, उसमें फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं. ऑन द अदर हैंड we have certain markets which are highly unregulated or unorganized, okay. अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स भी होते हैं जहाँ पे लेबरर्स अपने सर्विसेज ऑफर करते हैं, दैट इज अ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. तो मार्केट्स ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं, अनऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं. ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे. दैट्स द ओनली डिफरेंस इन दिस केस. The buyers in this market, the buyers and sellers meet at a specific time and place, okay. They meet at a specific time and place. So if we consider our class to be a market, okay, हमारा क्लास जो है अगर हम उसे मार्केट की तरह कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कैसे और आप कैसे इसे क्लास की तरह, क्लास को मार्केट क्यों बोल रही हूँ मैं, because we all are together meeting, okay. You are buyers and I am a seller of my knowledge, okay. You are buyers of knowledge, I am seller of the knowledge. We all together come in order to meet at a specific time, that is 12 बजे हमारा क्लास का टाइम है, तब हम लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं. एंड एट अ स्पेसिफिक प्लेस, ओके, वी मीट एट गूगल मीट, ओके. गूगल मीट के मीडियम से हम लोग मीट कर रहे हैं. और इफ इट इज अ ऑफलाइन क्लास देन वी वुड बी मीटिंग एट कॉलेज, ओके. सो आई एम अ सेलर ऑफ सर्विसेज, you are a buyer of services. We both together meet, we all together meet at a specific point, a specific location. You are a group of buyers, I am a seller, I am selling my services. तो इसको भी हम लोग मार्केट की तरह देख सकते हैं. सो यहाँ पे स्पेसिफिक थिंग आपने ये ध्यान में रखना है कि डिमांड है कि नहीं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. अगर डिमांड है और आप सप्लाई कर रहे हो एंड सप्लाई अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली उसे हम लोग वहां पे we would be considering it to be a market wherein the supply and the demand are intersecting or interacting with each other, or the buyers and sellers are interacting with each other. In the market, the buyers would come to know. What does the buyers come to know, or what do the buyers come to know? The buyers side comes to know as to how the transactions, how much are they willing to buy, okay. कि buyers क्या बताते हैं market में आके, buyers state at what price are they willing to buy and in which quantity, ओके. कितनी क्वांटिटी में, कहाँ से वो कितना खरीदने के लिए तैयार है, वो बायर्स यहाँ पे स्टेट करते हैं. बायर શું કહે છે, બાયર શું ઇન્ફોર્મ કરે છે, બાયર્સ આ બાબતને ઇન્ફોર્મ કરે છે કે એ કેટલી ખરીદી કરવા માંગે છે, ઓકે. કેટલી ખરીદી કરવા માંગે છે અને કેટલા પ્રાઇસ ઉપર ખરીદી કરવા માંગે છે, એ બહુ અગત્યનું છે. કે કેટલું ખરીદવું છે એ અગત્યનું નથી, ઓકે. સેલરના માટે શું જાણવું અગત્યનું છે. Seller has to know as to what is the price that the buyer is willing to buy, and on the basis of that the seller would be determining his prices, okay. Seller अपने prices buyer कौन से price पे खरीदने के लिए ready है वो जानने के बाद अपने prices को determine करता है. On the other hand, sellers, what do they come to know? Sellers come to know
sellers come to know how much to be produced and what should be the price. प्राइस क्या होनी चाहिए और सेलर्स क्या कितना वो प्रोड्यूस करेंगे, वो दोनों चीजें वहां पे वो लोग दिखा सकते हैं या फिर जान सकते हैं. બાયો શું જાણવા માંગે છે કે બાયો શું કહેવા માંગે છે માર્કેટમાં આવીને, એ એવું કહે છે કે હું આટલા યુનિટ્સ કે એકમોની ખરીદી કરીશ અને આ પ્રાઇસ ઉપર ખરીદી કરીશ. સેલર શું કહે છે, હું આટલા એકમોની ઉત્પાદન કરીશ અને આ પ્રાઇસ એનું ફિક્સ કરીશ. તો એ બંનેનું ઇન્ટરેક્શન જ્યારે થાય છે ત્યારે તમારી ઇક્વિલિબ્રિયમ સેટઅપ થાય છે. Buyers, what do they state? They state that the price at which they are willing to buy and the quantity that they are willing to buy. The sellers state the production that they are willing to undertake and the prices that they are trying to fix. And when these two interact with each other, there the equilibrium is established. More often what we find is that जनरली जब भी ये दोनों चीजें इंटरैक्ट करती है या फिर इंटरसेक्ट करती है, वहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करता है. ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट फॉर्म्स में ऑलरेडी देखा है. जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन था, मोनोपोली था, देन अदर फैक्टर्स जो हमने देखे थे, उसमें हमने डिमांड साइड के तरफ से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया था. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई साइड को भी लाके हम लोग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. Now, more or less the markets are organized, okay, less organized. For example, एक एग्जाम्पल लेते हैं. कोई एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है एक पर्टिकुलर टाइम में, ओके. बायर्स जो है आइसक्रीम खरीदने वाले, वो सभी एक ही जगह पे आके नहीं मिल पाते हैं. क्यों? क्योंकि it's not possible for all the buyers of the ice cream to come together and organize themselves and meet at a one place, okay. एक जगह पे आके वो सब लोग इंटरैक्ट कर ले, एक जगह पे आके वो सब लोग एक जगह पे बैठ जाए और वहां पे आके वो लोग खरीदे, ये पॉसिबल नहीं है. सेलर्स जो है ऑन द अदर हैंड, वो हर जगह डिफरेंट लोकेशन में इसीलिए डिवाइड हो जाते हैं, ओके. क्यों आइसक्रीम की दुकानें हर जगह पे हमें दिखती है या फिर डिफरेंट लोकेशंस में क्यों आइसक्रीम की दुकान लगानी पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ आप एक ही जगह पे ना लगा दे आइसक्रीम की दुकान की, ये सेंट्रल लोकेशन है, यहाँ पे आके जिसको आइसक्रीम खाना हो खा लो, ऐसे आप नहीं कह सकते. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बायर्स टू ट्रैवल सच अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड बाय आइसक्रीम. So what we do is that we divide the sellers in such a manner that they are able to cater to the needs of the buyers of that particular location. So sellers different locations में available है, sellers different locations में available है, और buyers जो है वो scattered रहते हैं. तो इन दोनों लोगों को बीच में या फिर कहीं पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बनाने के लिए हम वहां पे एक मार्केट खड़ा करते हैं. और मार्केट इट्स नॉट अ फिजिकल प्लेस, ओके. मार्केट कोई एक फिजिकल जगह नहीं है कि भाई इसे आप मार्केट कह दो तो फिर एक जगह पे दुकान है तो फिर वो मार्केट है, ऐसा नहीं है. मार्केट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. जहां जहां पे भी बायर्स और सेलर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे के साथ में आके कुछ एक ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं, तब वहां पे उसे हम लोग मार्केट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्केट में, आइसक्रीम मार्केट में कोई यहाँ पे सेलर आके ये बोली नहीं लगा रहा है कि भाई एक आइसक्रीम को इतने पे बेचेंगे, ओके. सेलर्स, हॉकर्स आपको बताते हैं कि भाई मार्केट इतना प्राइस हमने फिक्स किया है, पर कोई चिल्ला के आपको ये नहीं बताता है कि ये हमने प्राइस डिसाइड किया है, ओके. The rate card is available, the price is available, but no one is saying that कि आप एक ही आइसक्रीम कोन बचा है, आखिरी आइसक्रीम कोन है, जितना आप पे करना चाहो आप पे करो, ऐसा कोई नहीं कहता. The prices are fixed. As a result, what happens is that in this case, when the market here is highly organized कैसे? क्योंकि प्राइसेस फिक्स्ड है, लोकेशन फिक्स्ड है, कितने बायर्स आने वाले शायद से वो भी फिक्स्ड है, कौन सेलर है वो भी फिक्स्ड है. बट यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं किया जा रहा है. ऑन द अदर हैंड, ऑप्शन मार्केट को भी हम लोग या फिर जहाँ पे भी बोली लगा के कोई भी बेचा जा रहा है,
वहां पे भी आप मार्केट ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि सेलर्स और बायर्स एक दूसरे के साथ में वहां पे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं. They are interacting even at that particular place, and you are able to create a market in such a manner that वहां पे भी आप as group of buyers are coming to buy group of buyers are coming to a seller to buy certain thing. Okay, वो अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि आपको नहीं पता है कि प्राइस क्या होने वाली है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, क्योंकि बोली लगाई जा रही है और उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि प्राइस क्या होगा. सो बोथ ऑफ दीज स्टेजेस आर अ डिफरेंट मार्केट. दोनों मार्केट से एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पे प्राइजेस फिक्स्ड है, बायर्स मोर और लेस फिक्स्ड है, सेलर्स फिक्स्ड है, इंटरेक्शन हो रहा है वहां पे मार्केट में, रेट कार्ड अवेलेबल है, प्रोडक्ट फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है. ओके, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. ऑन द अदर हैंड ऑप्शन मार्केट में प्रोडक्ट है, बायर्स है, सेलर है, पर प्राइस फिक्स नहीं है. प्राइस क्या डिटरमाइन होगी वो आपको नहीं पता है, तो भी वो मार्केट की तरह ही आप उसे कंसिडर करोगे, इवन दो इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. यहाँ पे दोनों पॉइंट्स ऑफ टाइम में या फिर दोनों जगहों पे बायर्स एंड सेलर्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन अ वेरी वेरी क्लीन एंड प्रिसाइज मैनर. वहां पे दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो तो रहा है. यू आर एबल टू फाइंड आउट कि ओके सेलर्स अवेलेबल है और बायर्स भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, सब कुछ है. ओके, एक जगह पे बस एक ही डिफरेंस है कि प्राइस नहीं डिसाइड की गई. प्राइस क्योंकि डिसाइड नहीं की गई है, इसीलिए वो अनऑर्गेनाइज मार्केट का हिस्सा बन सकता है. बट ऑक्शन मार्केट्स जो है, ऑक्शन जो ऑक्शनियर्स जो करते हैं, जो बोली लगा के बेचे जाते हैं प्रोडक्ट्स को, वहां पे उसे अब अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट पूरी तरह से नहीं कह सकते. आइसक्रीम के लिए ऑप्शन नहीं किया जाता है, कीमती प्रीशियस आइटम्स के लिए ऑप्शन किया जाता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन हिम. बट वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम बिकॉज आइसक्रीम हम सबको पता है, इसीलिए हमने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया. नाउ market in such a manner can be described to be, there are two different types of markets that we can take into assumption. The first one is a competitive market and second one is a non competitive market. कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब है कि वहां पे बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, जैसे हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. नाउ इकोनॉमिस्ट जनरली कॉम्पिटिटिव मार्केट वर्ड तभी यूज करते हैं जहां पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स. ओके, कॉम्पिटिटिव मार्केट. ओके, व्हेन वी से कॉम्पिटिटिव मार्केट, competitive market, we would be having a competitive market when there are many buyers and many sellers. बहुत सारे बायर्स भी होंगे और बहुत सारे सेलर्स भी होंगे, उस केस में हम उसे कॉम्पिटिटिव मार्केट कहेंगे. यहाँ पे ईच सेलर वुड बी हैविंग अ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट. ओके, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंट्रोल होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, बहुत ही कम कंट्रोल रहता है. इसकी वजह से वहां पे हम उसे कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं. नीदर द बायर नॉर द सेलर इज एबल टू इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट इन द मार्केट. वहां पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता है प्रोडक्ट का. एज अ रिजल्ट इट इज नोन एज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. व्हाई? बिकॉज फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई determine as to what would be the prices of a particular commodity. We will not discuss as to what are the characteristics of competitive market and what are the characteristics of monopoly and all of these things, because we have already covered them in detail in the previous semester. Perfect competition मैंने आपको बता दिया. Can anyone tell me what is a monopoly? Chanchal, can you tell me what is a monopoly? Okay, Khushbu has replied. Okay, can okay, Urja, can you tell me what do you mean by a oligopoly?
मोनोपोली की डेफिनेशन खुशबू ने बताई है। एक और मार्केट टाइप आता है जिससे हम लोग मोनोप्सनी कहते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोप्सनी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मोनोप्सनी, ओके, जैसे मोनोपोली में वन बायर है एंड सॉरी वन सेलर है एंड मेनी बायर्स है। मोनोप्सनी में वन बायर रहता है एंड मेनी सेलर्स रहते हैं। Okay, monopsony is a type of competition wherein many sellers are there but only one buyer is there. That's a monopsony type of a competition. Monopsony का example ये है कि जितने भी for example anyone who is any government agency, yeah, there are many number of sellers. Oligopoly में बहुत सारे sellers रहते हैं। ओके, ओलिगोपोली में भी बहुत सारे सेलर्स रहते हैं बट दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। ओके, दे आर सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट, नॉट एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। वहां पे प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन रहता है। आपका प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। कहीं ना कहीं पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसका आप क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको अवेलेबल हो जाता है। वैसे प्रोडक्ट्स को आप ओलिगोपोली में बेचते हैं। ओके, मेनी नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर एंड मेनी नंबर ऑफ बायर्स आर देयर बट परफेक्ट कंपटीशन में ढेरों सेलर्स रहते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सेलर्स रहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। ओलिगोपोली में few sellers are there and many buyers are there. Okay, few sellers and many buyers is the characteristic of an oligopoly market. Oligopoly market में प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं वो होमोजीनियस नहीं है, इसलिए वो परफेक्ट कंपटीशन से अलग है। वो हेट्रोजीनियस भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू यूज अ सोप, ओके, आप डव भी यूज कर सकते हो, निविया भी यूज कर सकते हो, लक्स भी यूज कर सकते हो, लाइफ बॉय भी यूज कर सकते हो, लेरिल भी यूज कर सकते हो। ये सारे सोप के वेराइटीज। ओके, सो वो ओलिगोपोली मार्केट है। फ्यू सेलर्स आर देयर आर मेनी सेलर्स बट ओनली आप उनको गिन सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन में आप सेलर्स की गिनती नहीं कर सकते बिकॉज ढेरों सेलर्स रहते हैं और ढेरों बायर रहते हैं वहां पे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। Okay. So when we are talking about the demand and supply, okay, अब हम लोग फिर से डिमांड सप्लाई की तरफ आ जाते हैं। डिमांड सप्लाई की जब हम लोग बात करते हैं तब वहां पे आपके पास दो कंडीशंस आपने देखने हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसलिए मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड फिर से पढ़ाया था। लॉ ऑफ डिमांड, ये आपका रटा हुआ होना चाहिए। ओके, लॉ ऑफ डिमांड इज समथिंग दैट हैज टू बी ऑन। आपको नींद से कोई जगह है तो भी आपको लॉ ऑफ डिमांड याद होना चाहिए। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, when the prices of a commodity increases, the demand of the same commodity goes down. Okay, ये आपको याद होना चाहिए। At any point of time अगर कोई पूछे आपको लॉ ऑफ डिमांड बताओ तो आपको फट करके बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड ये है। ओके, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली सेज कि आप जैसे जैसे कोई एक प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करते करते जाते हो तो उसकी डिमांड उसकी प्राइसेस बढ़ रही होती। व्हाई? बिकॉज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि प्राइजेस किस वजह से बढ़ रही है। लॉ ऑफ डिमांड सेज कि भाई प्राइजेस बढ़ रही है। ओके, प्राइजेस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है पर डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है। योर डिमांड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड द सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपके ऑटोमेटिकली प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ओके, जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली व्हाट वी डू इज दैट प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो हम कम कंज्यूम करने लग जाते हैं। जब हम लोग कम कंज्यूम करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे फिर से प्राइजेस नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है, आपने डिमांड कम कर दी तो आपकी डिमांड ऊपर चली गई या फिर आपके प्राइजेस नीचे आ गए क्योंकि आपने कम डिमांड की। ओके एक कॉन्सेप्ट हमने और पिछले सेमेस्टर में देखा था, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड एक देखा था कि एक इंसान की डिमांड कैसे काम करती है। ओके, दैट इज पर्सन वंस डिमांड, पर्सन टूज डिमांड creates the
मार्केट डिमांड। ओके, ये मार्केट डिमांड आपकी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई इंसान एक्स प्राइस पे वाई गुड्स मांग रहा है, दूसरा इंसान एक्स प्राइस पे वाई गुड्स मांग रहा है। अब मार्केट डिमांड आपकी कैसे क्रिएट होगी? एक्स प्लस एक्स is the price, x is the price, and y plus y, that is y1 plus y2, let's assume that, okay, y1 plus y2 is your market demand. Okay, आपकी market demand ऐसे create हो रही। Let's take an example of a product and then see। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल एट प्राइस ऑफ 5 रुपीज, ओके, 5 रुपए पे कोई एक इंसान एक यूनिट खरीद रहा है। ओके, दिस इज द प्राइस, दिस इज y axis, this is x axis, and this is quantity। okay, then सेकेंड इंसान 5 रुपीज पे, वो भी 5 रुपीज पे, let's assume let's assume he is buying 3 units। okay, okay, at so market demand कैसे क्रिएट होता है? at 5 rupees the overall market demand is, at 5 rupees the overall market demand is 1 plus 3 is equal to 4। ओके, ये आपका टोटल ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड आप निकाल सकते हो। ओके, दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड और दिस इज द मार्केट डिमांड दैट यू हैव। So the demand for every person, okay, demand of every person which is there in that particular market gives out to the market demand। okay, aggregate demand या फिर इसे हम लोग मार्केट डिमांड कह सकते हैं। ए की डिमांड, बी की डिमांड, सी की डिमांड, डी की डिमांड, एन की डिमांड, ऐसे हम लोग सबकी डिमांड जब कंसिडर करते हुए जाएंगे तब आपकी मार्केट डिमांड क्रिएट होगी। Now, market demand function shows how, let's give the definition of market demand function. So, market demand function market demand function shows how, और मार्केट डिमांड को कर देते हैं इससे हम लोग, मार्केट डिमांड को shows how the total quantity, how the total quantity demanded of a good varies as the price of the good varies। गुड की जब प्राइस वेरी होती है तब क्वांटिटी डिमांडेड कैसे वेरी होती? ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, हाउ मच अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के बाद जब भी आप टोटल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड कैसे प्राइस के हिसाब से रिएक्ट करता है वो हम लोग देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड, ये आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ओके, ये आपने जो डिमांड के रिलेटेड में पढ़ा था उसकी पूरी रिवीजन अभी चल रही है। सो हमारा एक आता था शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व्स। ओके, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड decrease in
डिमांड, डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज की बात हमने की थी। तो डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे क्रिएट होता है, अगर हमने यहाँ पे प्राइस रखा है वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी रखा है, we have kept the quantity on x axis. Say for example this is the demand curve d1 d1, okay, d1 d1 हमारा डिमांड कर्व है। प्राइस बढ़ने की वजह से, ओके, यहाँ पे प्राइस हमने यहाँ पे ये रखा है, this is the quantity demanded at price p and q, this is the quantity, okay, यहाँ पे हमारा डिमांड हमने सेट किया है। अब हमारा जो है किसी एक फैक्टर की वजह से आर डिमांड कर्व है शिफ्टेड अपवर्ड्स, ओके, डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। अपवर्ड कैसे शिफ्ट हुआ है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हम लोग वो वाला अगर चीज निकाल दे, एनी चेंजेस that raises the quantity that a buyer wishes to purchase, okay, कोई भी वजह से अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, this is the quantity now that I would be purchasing, that is the Q1 quantity, okay, तो D2 कर्व की तरफ अगर मैं ऊपर के तरफ शिफ्ट हुई हूँ तो दिस इज नोन एज अ इंक्रीज इन डिमांड। If I have shifted upwards, the demand curve has shifted upwards in this case, then it is an increase in demand. On the other hand, if the demand curve has shifted downwards, then it is a decrease in demand, okay, this is a decrease in demand. So any changes that increases demand at the every prices, okay, कोई भी प्राइस के ऊपर आपकी डिमांड अगर बढ़ जाती है तब आप जो है आपकी क्वांटिटी आप बढ़ा लेते हो, या फिर आपने किसी भी वजह से, if there is anything that is happening which is forcing the customer to buy more or forcing the customer to buy less, then there is an increase or decrease in demand which is known as a shift in demand curve. अब इनकम जो है, इनकम डिटरमाइंस वेदर विच टाइप ऑफ गुड दैट यू आर परचेसिंग। तो हमने दो टाइप ऑफ गुड्स देखे थे, एक थे आपके नॉर्मल गुड्स, ओके, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, और फिर आते हैं आपके इंफीरियर गुड्स, ओके, जिसे हम लोग गिफन गुड्स भी कहते हैं। अब नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, as the income increases the consumption of these goods increases, okay, इनके डिमांड बढ़ जाती है। with an increase in income the demand for the normal goods increases, with a decrease in income the demand for normal goods decreases. જ્યારે તમારી આવક વધે છે ત્યારે તમારી આ વસ્તુઓની ડિમાન્ડ વધી જાય છે, એવા ગુડ્સને તમે નોર્મલ ગુડ્સ કહો છો। on the other hand, when the income increases, okay, when the income increases the demand of any commodity also decreases, sorry, when the income increases और इन गुड्स की अगर डिमांड कम हो जाती है तो अब उसे इंफीरियर गुड कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप हायर क्वालिटी गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। તો જ્યારે તમે એવા ગુડ્સની ખરીદી કરો છો જેની પ્રાઇસ જે છે એ સોરી તમારી આવક વધવાથી એ ગુડ્સની કન્ઝમ્પશન તમે ઘટાડી નાખો છો, એવા ગુડ્સને તમે इंफीरियर गुड्स कहो છો। सेम इंफीरियर गुड्स कहो છો क्योंकि उस गुड को अब आप कंज्यूम नहीं करना चाहते, क्योंकि आप हायर लेवल ऑफ या फिर हायर क्वालिटी ऑफ गुड्स को आप अफोर्ड कर सकते हो। बाकी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। सो in next lecture we would be talking about supply, okay, अभी तक हमने डिमांड की रिवीजन कर ली है, अब हम लोग सप्लाई की तरफ जाते हैं। सप्लाई जो है वो आप पहली बार पढ़ रहे हो, ओके, इन द बीकॉम लेवल यू आर स्टडिंग द सप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए हम लोग सप्लाई अच्छे से अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आप लोग के लिए अटेंडेंस ऐड करूँगी।